नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सत्ता शासन न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई के अमरावती जिले में सभी पदोन्नतियां। अमरावती पत्रकार पदों की नियुक्ति राज्य पत्रकार संगठन मुंबई की ओर से। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई की ओर से अमरावती जिले में कई वर्षों से चली आ रही पदोन्नतियां रद्द कर नई पदोन्नतियां की गई। इसी प्रकार संगठन के विदर्भ अध्यक्ष नवीन मुंडे की उपस्थिति में अनेक पदों पर नियुक्तियां की गई। अमरावती जिले में मुख्य रूप से प्रवीण शेकोकार को अमरावती जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि शुभम मेश्राम को जिला सचिव और जिला पत्रकार विजय गायकवाड़ को एंटी अटैक एक्शन कमेटी में नियुक्त किया गया। साथ ही अमरावती जिला सदस्य उपस्थित थे। विदर्भ अध्यक्ष नयन मोढ़े, प्रवीण शेकोकार जिला अध्यक्ष, विजय गायकवाड़ पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति जिला अध्यक्ष शुभम मेश्राम, जिला सचिव संजय तायडे, गजानन मेश्राम, राजा भाऊ वानखड़े, राव साहेब देशमुख, अनिरुद्ध उगले, अशोक जोशी, नकुल नायक, अर्चना रक्षे यावेळी उपस्थित होते। राज्य पत्रकार संघ गेल्या अनेक वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यरत आहे आणि गेल्या 2 दिवसापूर्वी नयन मुंडे यांची विदर्भावर नियुक्ती झाली। त्याबद्दल नयन भाऊंचं या ठिकाणी मी मनापासून अभिनंदन करतो। आणि आज या ठिकाणी सर्किट हाऊसमध्ये महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघातर्फे सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये माझे मित्र प्रवीणजी शेकोकार जिल्ह्याचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी माझी नियुक्ती पत्रकार विरोधी कृती समितीच्या अध्यक्षस्थानी केलेली आहे। त्याबद्दल सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो। आणि या समितीवर हल्लाबोल कृती समितीवर माझे मित्र, माझा लहान बंधू शुभम मेश्राम यांची सुद्धा नियुक्ती झालेली आहे। गेल्या अनेक दिवसापासून पत्रकारावर सातत्यानं हल्ले होत आहे। हल्ले थांबण्याचं नाव शासन कुठलेही असो, परंतु शासन फक्त कागदोपत्री घोषणा करते, परंतु हल्ले मात्र थांबत नाही। आणि म्हणून या अमरावती जिल्ह्यामध्ये हल्ला विरोधी कृती समिती पत्रकारांची निर्माण झालेली आहे। पत्रकारावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय अत्याचार झाला तर त्याला न्याय देण्याचं काम आम्ही सातत्यानं करू। वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही करू। आणि यानंतर जर कोणी पत्रकारावर अर्रावीची भाषा बोलत असेल तर त्याला मात्र धडा शिकवल्याशिवाय आम्ही सुस्त बसणार नाही। एवढंच या ठिकाणी सांगतो। पुनश्च सर्वांचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्ता शासन न्यूज।